जय जगन्नाथ वेलकम टू MatSciOdia मु पूर्ण सर समस्त को स्वागत करछि आज सेशन को किसी टेक्निकल ग्लिच थिबा जोगु क्लास टी सुरखुरे स्टार्ट ही पार नथिला आमे आज अमीन और बीडीसी रो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करिया को जाउछु वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन आंसर ऑफ अमीन एंड बीडीसी ठीक अछि तो अमीन और बीडीसी रो क्वेश्चन आंसर आमे बे डिस्कस करिया को जाउछे सो प्लीज तुमे तुमरो सांग साथी मानको शेयर कर दियो सो दैट अमीन और बीडीसी रो क्वेश्चन हेलो हेलो वॉइस एबे आछि हां एबे वॉइस आछि एबे किछिटा वॉइस आछि ना वॉइस बहुत स्लो अछि राइट वॉइस मात्राधिक भाବରେ स्लो अछि ठीक कथा ଗୋଟେ ମିନିଟ वॉइस एबे टिके टिके आछि ଆସିଲା ବଟ୍ ଯୋଉ ଆସିଲା କି ସେଟା କମ୍ ଭଏସ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଏତେ ଆସୁ ହିଁ ନାହିଁ हेलो हेलो ଭଏସ୍ ଏବେ ଆସୁଛି ନା ଟିକେ ନଏସ୍ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଭଏସ୍ ଆସିଲେ ନା हेलो वॉइस एबे आସୁଛି ନା ଟିକେ ନଏସ୍ ଆସିବ ଭଏସ୍ ଆସିଲେ ନା ओके तो जा हो नॉइस आसले आसु पछे इट इज मैनेजेबल फिल्टर्स
ମୁଁ ଏତେ ସମୟ ହେଲା କରିକି ରହିଥିଲି ତଥାପି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା। ଏବେ କିଛିଟା ନଏସ୍ କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେଇଯିବ, ନଏସ୍ ଆସିବନି କିଛିଟା, ଦେଖିବା କେତେ ଦୂର କ'ଣ ହେଉଛି। ନଏସ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ମୁଁ କ୍ୟାନସେଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଭଏସ୍ ଆସୁଛି ରାଇଟ୍ ନାଉ, am I audible? ଏବେ ଭଏସ୍ ଆସୁଛି ରାଇଟ୍ ନାଉ, am I audible? ଭଏସ୍ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଆସୁଛି। ନମସ୍କାର ରିତୁ ଅଗ୍ରୱାଲ, କେମିତି ଅଛ? ସରି ଫର୍ ଦିସ୍ ଇସ୍ୟୁ, ବହୁତ ସମୟ ହେଲା ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାଇକ୍ ନେଇ କରିଥିଲି, ମାଇକ୍ର ଚାର୍ଜ ସରିଗଲା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ। ହଉ, ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଗ୍ୟାବ୍ରିଏଲ୍ସ ଥାଲିମାଇଡ୍ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ରେ ରିଏଜେଣ୍ଟ କ'ଣ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି? Which reagent is used in Gabriel's thalamide synthesis? Which reagent is used in Gabriel's thalamide synthesis? Gabriel thalamide synthesis रे को reagent टा यूज करा जाए? के कहि परिबो which reagent is used in Gabriel's thalamide synthesis? Gabriel's thalamide synthesis रे को reagent टा यूज करा जिवो? ऑप्शंस होची KOH, H2SO4, chloramine, PDS2। जदि हम देखिबा KOH यूज करा जाए गैब्रियल थालिमाइड सिंथेसिस। तो एठी रहछि तुम्हारा थालिमाइड माने एटा होछि CONH2 CONH। so this is your थालिमाइड when react with KOH and in presence of your alkyl halide and followed by hydrolysis, you will get corresponding amine, 1 degree amine plus thalic acid right, and plus there will be KX. so amara KOH hochi sathik uttar. The most basic among the following, most basic कोटा प्रथम रही आनिलिन, तापर रही ट्राई इथाइलामिन, डाइइथाइलामिन, इथानामाइन। फास्ट रही आनिलिन, तापर रही ट्राई इथाइलामिन, तापर आछी डाइइथाइलामिन, आउ तापर आछी इथाइलामिन। सो सबुठु मोस्ट बेसिक एमानक भितरे सबुठु मोस्ट बेसिक कोटा? Which one is the most basic among the following? Which one is the most basic among the following? एमानक भितरे सबुठु मोस्ट बेसिक होची जदि हम देखिबा 2 डिग्री अमीन होची सबुठु मोस्ट बेसिक। तापर आछी 1 डिग्री अमीन, तापर आछी 3 डिग्री अमीन। ठीक अछि। Which one the following react with CH3COCl? Which of the following react with CH3COCl? CH3COCl सहित एमानक भितरु कोटा रिएक्ट करिवो? ट्राइमिथाइलामिन, डाइमिथाइल इथाइलामिन, ट्राइमिथाइलामिन। तो ट्राइमिथाइलामिन माने CH3 होल थ्राइस N, डाइमिथाइलामिन माने CH3 होल ट्वाइस NH, डाइमिथाइल इथाइलामिन माने CH3 होल ट्वाइस NCH3 C2H5 आउटे ट्राइमिथाइलामिन। तो जदि हम देखिबा आम पाखे कौन रहा दरकार, निहाती भाव हाइड्रोजेन रहा दरकार जे क्लोरीन सहित रिएक्ट करिवो। तेणु ये डाइमिथाइलामिन हम सठिक उत्तर सी रो। क्लोरोबेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटमेंट ऑफ एनिलीन विथ, एनिलीन को कहा सहित ट्रीटमेंट कले आमे क्लोरोबेंजीन पाई परिबा? एनिलीन को कहा सहित ट्रीटमेंट कले आमे क्लोरोबेंजीन पाई परिबा? एनिलीन होची बेंजीन रे NH2, तो यार तुम्हें केंदी कले क्लोरोबेंजीन पाई परिबो? एक तो CuCl नहीं परिबो, ठीक अछि, जोटा कि मेयर रिएक्शन से अनुसार एटा कोन हबो? इट विल गिव्स राइज टू क्लोरोबेंजीन, इट विल गिव राइज टू क्लोरोबेंजीन। सो यार सठिक उत्तर हबो डी रो सठिक उत्तर कोन हबो? शुभम बात्या कहले 2 हबो, HNO2 CuCl। डी रो सठिक उत्तर कोन हबो? डी रो सरस्वती कहले डी रो 3 हबो सर, Cl2 UV लाइट।
Cl2 UV light हबो aniline रू क्लोरोबेंजीन कौन कले aniline रू क्लोरोबेंजीन मते दरकार कौन कले aniline रू क्लोरोबेंजीन आसीबो दिस इज योर सेंड मेयर रिएक्शन CuCl HCl नहीं परिबो ठीक अछि सो क्लोरोबेंजीन आमे aniline रू क्लोरोबेंजीन मते दरकार मु कौन कले पाइबी तुमरो क्लोरोबेंजीन को रिएजेंट ले क्लोरोबेंजीन मते मिलिबो को रिएजेंट नबा द्वारा क्लोरोबेंजीन मिलिबो aniline को कहा से रिएक्ट करले मते क्लोरोबेंजीन मिलिबो देखिबा Normally, जदि तुम्हें क्लोरीन रिएक्ट करिवो इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 it will gives rise to 2,4,6 trichloroaniline जोटा कि ऑप्शन नंबर डी हबनी क्लोरीन और सनलाइट जदि नहीं जाउछो क्लोरीन और सनलाइट नहीं गले सी भी तुम्हारा कोन दबो क्लोरीन और सनलाइट नेले सी तुम्हारा अन्य कोट जगह रे सब्स्टिट्यूशन हे जिवो हाइड्रोजन बदल CuCl HNO2 CuCl ना CuCl केवल कोड have ऑप्शन नंबर ए ना ऑप्शन 1 ना ऑप्शन नंबर 2 कोड have सठिक उत्तर ये क्वेश्चन को नहीं ठीक है डाउट रही तो ये CuCl ही सठिक उत्तर हो ठीक है CuCl ही सठिक उत्तर हो aniline रो बेंजीन क्लोराइड तापर एठे CuCl ही हो जोटा कि हमें कहबा सेंड मेयर रिएक्शन तो यार सठिक उत्तर एक्चुअली हबो CuCl ओके ऑप्शन नंबर 1 नॉट ऑप्शन नंबर 2 CuCl will gives rise to क्लोरोबेंजीन CuCl से तो रिएक्ट करले क्लोरोबेंजीन आसीबो अच्छा HNO2 जदि नउछ गोटे मिनिट CuCl की ऑप्शन नंबर 1 की 2 आई एम इन डाउट ना ऑप्शन नंबर 1 होबनी इट इज ऑप्शन नंबर 2 ही होबो ऑप्शन नंबर 2 काहे के होबो कारण HNO2 देले सॉरी HNO2 जदि हम HNO2 से रिएक्ट करबा HNO2 से रिएक्ट करबा द्वारा ये कोन दोछि ना नाइट्रस एसिड से जेतले हम रिएक्ट करछे aniline को it will gives rise to corresponding aniline when react with HNO2 it will give rise to corresponding benzene diazonium chloride when react with CuCl it will give rise to chlorobenzene so आमे जदि देखिबा एठे दुईटा रिएजेंट होछि HNO2 सहित रिएक्ट करले ये फर्स्ट कोन दबो HNO2 सहित रिएक्ट करले ये दबो benzene diazonium chloride N2+Cl- जोटा को पुणी अथरा में कोन करबा ना रिएक्ट करबा विथ CuCl and it will give rise to chlorobenzene so sorry मु एटा भूल कह देथि ऑप्शन नंबर 2 हबो सठिक उत्तर benzene diazonium chloride when react with diazonium chloride to give benzene diazonium chloride से तो diazonium chloride को हमें रिएक्ट करबा benzene diazonium chloride BDC सहित हमें diazonium chloride को रिएक्ट करले कोन पाइबा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को डाइजोनियम क्लोराइड से तो रिएक्ट करले हमें कोन पाइबा पारा दिस इज अ टाइप ऑफ कपलिंग रिएक्शन एटा होछ गोटे कपलिंग रिएक्शन लाने कपलिंग रिएक्शन रे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हमें कोन करछे ना गोटे डाइजोनियम क्लोराइड माने हमें कहि परिबा लाइक CH3N2+Cl- एभलिया so what will it give rise to ये कोन दबो
Benzene diazoxide chloride when react with diazoxide chloride. So it will give rise to the azodie compound, right? ये कौन दबा azodie compound दबा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जेतबेला में आउट डाइजोनियम क्लोराइड से तो रिएक्ट करबा इट विल गिव राइज टू azodie compound. तो ये गोटे azodie compound आसीबो. azodie माने पारा क्लोरोफिनॉल हबो ना पारा हाइड्रोक्सी बेंजीन. पायरा हाइड्रोक्सी आजोबेंजीन और पारा क्लोरोफिनॉल केबे हबनी पारा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन. बट पारा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन रे इडे क्वेश्चन एडा भूल रहिछि. ई क्वेश्चन रा आंसर एडा तुमको ग्रेस मिलिबो. एडा एक्चुअली ग्रेस मिलिबो. एडे क्वेश्चन रे रहिया कथा. ए क्वेश्चन मॉडिफाई हवा कथा. एडे ग्रेस मिलिबो. ए क्वेश्चन एडा डाइजोनियम क्लोराइड बदल रे एडा हितांदा फिनोल सहित रिएक्ट करथांदा. फिनोल सहित रिएक्ट करके पारा हाइड्रोक्सी बेंजीन देथांदा. तेणु ये क्वेश्चन मॉडिफाई हला. एटा ग्रेस मार्क मिलिबो. ग्रेस मार्क मिलिबो. एडे ई नंबर रे ग्रेस मार्क मिलिबो. स्टेट एंड एक्सप्लेन कार्बाइल अमीन रिएक्शन. कार्बाइल अमीन रिएक्शन कोन? कार्बाइल अमीन रिएक्शन अमीन रो गोटे इंपोर्टेंट रिएक्शन जोटे कि तुम्हारा गोटे कार्बन बढ़ी थाए. गोटे कार्बन बढ़ी थाए. दिस इज योर कार्बाइल अमीन रिएक्शन. गोटे कार्बन जोठी बढ़ी थाए. अमीन रो सबडो इंपोर्टेंट रिएक्शन कार्बाइल अमीन रिएक्शन. मते को कार्बाइल अमीन रिएक्शन रे स्टार्टिंग मटेरियल कोन थाए? स्टार्टिंग मटेरियल कौन था? व्हाट इज द स्टार्टिंग मटेरियल इन कार्बाइल अमीन रिएक्शन? कार्बाइल अमीन रे स्टार्टिंग मटेरियल था अमीन तापर क्लोरोफॉर्म देन KOH. सो अमीन प्लस क्लोरोफॉर्म CaCl3 प्लस KOH and it will give rise to that alkyl isocyanate plus KCl plus water. Okay, so CaCl3 plus 3 moles of KOH. Okay, fine. 3 moles of KOH gives rise to alkyl isocyanate plus KCl plus water, right? How will you distinguish between ethanamine and aniline? Ethanamine और aniline को distinguish करिया पे कौन टेस्ट होइछि? कौन टेस्ट होइछि? How can you distinguish between ethanamine and aniline? और alkyl और aryl ग्रुप को केमति हमें distinguish करिवा? ethanamine and aniline गोटे टेस्ट को जोठी हमें इथानामाइन और aniline को हमें distinguish करि परिबा, चेक करि परिबा. जोटा कि एलिफेटिक दबा एरोमेटिक दबानी बा एरोमेटिक दबा एलिफेटिक दबानी. बहुत गुडे टेस्ट रही. बहुत गुडे रिएक्शन रही. जमती आम कहीपर हेलोजिनेशन सल्फोनेशन नाइट्रेशन बहुत गुडे रही. बी रो बहुत गुडे रिएक्शन रही. हेलोजिनेशन सल्फोनेशन तापरे बा तुम्हें जदि कहबो जे नाइट्रेशन जोटा कि आराइल दी अल्काइल दिन. ठीक अछि. सो आउ कोन हम बी रो आंसर जेम देखिबा. आउ बी रे आंसर हम तुमरो डाइआजेटाइजेशन जोटा कि हमरो HNO2 दे करा जिवो. एडे aniline दबो whereas ethanamine दबनी. What happens when BDC benzene diazoxide chloride is treated with CuCl and HCl? BDC is treated with CuCl and HCl. So 3 र C 2 र C
2 C benzene diazonium chloride is treated with CuCl and HCl. कौन हम आंसर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जेतबेला में ट्रीटमेंट करबा का सहित CuCl and HCl it will gives rise to chlorobenzene, right? It will give rise to chlorobenzene. So तुम chlorobenzene पाइबो, right? Next, why aniline is less basic than ammonia? Due to resonance. तो तुमको ये resonance करके देखिया को पड़िबो. Due to resonance करके देखिया पड़िबो. How can you synthesize ethyl chloride from methyl chloride? methyl chloride रू ethyl chloride केमदी पाइबो? बहुत सुंदर बढ़िया क्वेश्चन रही. methyl chloride रू ethyl chloride एटा methyl chloride रू ethyl chloride. So CH3Cl रू हमको दरकार ethyl chloride, that is C2H5Cl. गोटे कार्बन बढ़िबो. तो हमर मेन मोटिव रहउची कोन? मिथाइल क्लोराइड को केमी देले जदि हमें कन्वर्ट कर दे परिबा मिथानामाइन रे. If you can convert this into methanamine, then it will be easier to convert it into ethanamine. तो गोटे कार्बन बढ़ी परिबा by means of कार्बालामिन रिएक्शन. तो या को भाबो कोन केमदी कर परिबो? Think how can you do? So this is your कार्बालामिन reaction. Chloroform 2H, then CaCl3 chloroform number, and it will give rise to CH3CH2NC. That is your आमे कहि परिबा जे ethyl isocyanate दबो. It will give rise to ethyl isocyanate. तापरे सेडू केमती आमे ethyl chloride पाइबा. How can you get ethyl chloride from methyl chloride? एटा गोटे बहुत important reaction. Conversion रे एटा गोटे बहुत important reaction. एमिति भी परियो. आ गोटे वे रहिछि CH3Cl रहिछि मिथाइल क्लोराइड. ताकू मु कोन कली ना ताकू मु प्रथमे KCN सहित रिएक्ट कली. KCN सहित रिएक्ट कली इट विल गिव राइज टू CH3Cn plus KCl. CH3Cn plus KCl दे दबो. CH3Cn को फर्दर हाइड्रोलिसिस कर दे परियो and it will give rise to CH3COH. CH3COH दबो. CH3COH को फर्दर तुम्हें कौन कर परियो? रिडक्शन कर दे परियो and it will give rise to CH3CH2OH. CH3CH2OH को तापर कौन कर दे परियो ना CH3CH2OH सहित तुम्हें फर्दर HCl रिएक्ट करिवो. ताली ये कौन दबो? CH3CH2Cl प्लस वाटर बाहर पड़े. सो ये आमे ये वे रे भी कर दे परिवा. एटा इजी वे, इजीएस्ट वे. तापर क्वेश्चंस कोन रहिछि ना आइडेंटिफाई A B C D इन द फॉलोइंग रिएक्शंस. टॉलुइन को HNO3 आउ H2SO4 सहित रिएक्ट करा गला. सो 3 रो D टॉलुइन को हमें HNO3 sorry 3 रो C आउरी अछि. हाउ कैन यू ऑब्टेन methanol from ethanamine? Methanol from ethanamine. 3 रो C. How can you obtain methanol from ethanamine? 3 रो C रहिछि methanol from ethanamine. So this is CH3CH2NH2 रो हमको कोन दरकार? We are going to find out methanol CH3OH. ठीक अछि. methanol from ethanamine. तो ethanamine रो हमें केमि देले कोन कर दे परिबा? ethanamine को कोन कले हमें methanol पाइबा. How can you get methanol from ethanamine? Methanol from ethanamine. How can you get
methanol from ethanamine. Methanol from ethanamine तुमे केमिति पाई परिबो? How can you get methanol from ethanamine? Anyone who can say how can you get methanol from ethanamine? Methanol from ethanamine केमिति पाइबो? How can you get? So first हमें याको अल्कोहल रे कन्वर्ट कर दे परिबा. ठीक अछि, अल्कोहल रे कन्वर्ट कर दे परिबा. अल्कोहल रे कन्वर्ट करिया गले अमीन को अल्कोहल रे कन्वर्ट करिबा. अमीन को अल्कोहल रे कन्वर्ट करिया गले कहा सहित रिएक्ट कले अमीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल. अमीन को मते दरकार अल्कोहल रे कन्वर्ट करिया. सो इठे इथानामाइन को हमें अल्कोहल रे केमदी कन्वर्ट करिया? बाय रिएक्टिंग with HNO2, right? By reacting with HNO2. HNO2 सहित रिएक्ट करिया द्वारा ये कौन हिजबो? इथानामाइन अल्कोहल रे कन्वर्ट हिजबो. बट मिथानामाइन कथा जदि थांदा एडा अल्कोहल ही न थांदा, एडा इथर ही जांदा. तापर ताकू फर्दर तुमे ऑक्सीडेशन कर दियो बाय यूजिंग अल्कालाइल KMnO4 or PCC or any oxidizing agent. It will give rise to CH3COOH. So एसिटिक एसिड हिजबो. एसिटिक एसिड को बर्तन तुमे कहा सहित रिएक्ट करिवो ना? एसिटिक एसिड को जेतेबेले तुमे रिएक्ट करिवो कहा सहित? अमोनिया सहित. It will give rise to CH3CONH2. बर्तन CH3CONH2 को तुमे कौन कर परिवो ना? CH3 हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन कर परिवो. हॉफमैन ब्रोमाइड रे ब्रोमीन और NaOH बा ब्रोमीन KOH नहीं गले ये कौन दे दबो? It will give rise to CH3NH2. It will give rise to CH3NH2. तापर CH3NH2 को पुणी आउथरे HNO2 सहित रिएक्ट कले it will give rise to CH3OH. This is the way how can you get the compound. Yes, you are right. You can use that one also. Next question. नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा. नेक्स्ट क्वेश्चन रही कौन ना? नेक्स्ट क्वेश्चन रही तो ABCD हमको आइडेंटिफाई करिया पड़ियो. टॉलुइन को जेतल में HNO3 और H2SO4 दोचे. टॉलुइन को जेतल में HNO3 और H2SO4 दोचे. टॉलुइन व्हेन रिएक्ट विथ HNO3 एंड H2SO4. देखियो को अजीब बात लागछ. देखियो toluene when react with HNO2 and H2SO4. What you will get? टॉलुइन को जेतला में HNO2 और H2SO4 से रिएक्ट करिया. टॉलुइन when react with HNO2 and H2SO4. टॉलुइन when react with HNO2 and H2SO4 कौन दबो? सो ये तुम्हारा दबो corresponding toluic acid दबो. टॉलुइन when react with HNO2 and H2SO4. It will give rise to corresponding nitro compound, right? It will give rise to corresponding nitro compound. नाइट्रोटा हमरो पारा पोजीशन रे डायरेक्ट करिवो. सो पारा नाइट्रो टॉलुइन फॉर्म होबो. पारा नाइट्रो टॉलुइन फॉर्म होबो. ओके, पारा नाइट्रो टॉलुइन फॉर्म हला. तापर तमे हमें कोन करबा ना K2Cr2O7 और H2SO4 देले कोन दबसी.
K2Cr2O7 और H2SO4 देले सी कौन दबो toluene when react with para nitrotoluene को एबे हमें H2SO4 para nitrotoluene को हमें रिएक्ट करबा H2SO4 और K2Cr2O7 para nitrotoluene para nitrotoluene को K2Cr2O7 ଆଉ सल्फ्यूरिक एसिड सहित रिएक्ट करबा para nitrotoluene को एबे हमें K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट और टoluene को सहित रिएक्ट करले कोन दबो तो CH3 डा एटा तुमरो कोन हे जिवो ना CH3 डा एटा तुमरो हे जिवो ऑक्सीडाइज हे जिवो ऑक्सीडाइज हे कि ये कोन हे जिवो कोथरे कन्वर्ट हे जिवो कार्बोक्सिलिक एसिड कारण K2Cr2O7 गोटे भलो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट so it will convert the CH3 group into COH further हम एबे रिडक्शन करबा we are going to reduce SnHCl so SnHCl जेतेबेला हम दोचे COH को SnHCl देले ये कोन हे जिवो रिडक्शन कले ये कोन हबो NO2 will be converted into NH2 right NO2 will be converted into NH2 कारण SnHCl जेतेबेले तुमे दोचो NO2 will be converted into NH2 हर्षिता सिंह फर्स्ट ईयर क्लास एप्लीकेशन स्टार्ट करंती ये सी सर हर्षिता सॉरी सो COH बर्तन कोन दबो जदि हम देखिबा एडी तुमरो कोन होची जदि कार्बोक्सिलिक एसिड को आमे जदि रिडक्शन करबा कार्बोक्सिलिक एसिड को रिडक्शन करबा विथ SnHCl कोन दबो carboxylic acid on reducing with SnHCl किछ भी रिडक्शन दबा नहीं so COH will remain same whereas NO2 दा तुम्हारा NH2 रे कन्वर्ट हे जिवो फाइन तापर NaNO2HCl सहित आमे जेतोले रिएक्ट करबा NaNO2HCl और HCl सहित रिएक्ट करबा सोडियम नाइट्राइट और HCl ये कोन हे जिवो ना ये तुम्हारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हे जिवो NH2 will be converted into benzene diazonium chloride N2 plus Cl minus further hydrolysis कले benzene diazonium chloride को जेतोले हमें hydrolysis करबा it will give rise to N2 plus Cl minus so you will get that is your para carboxy benzene diazonium chloride इटा हबो कंपाउंड ठीक अछि so ये होची हमर ABCD next diazo reaction कोन product of the reaction how can you synthesize benzene and chlorobenzene Hofmann bromamide reaction how can you convert aniline into chlorobenzene एगुडा को तुमे निजे कर दे परिबो मिथाइलामाइन रो नाइट्रोमिथेन केमदी पाइबो आई होप तुमे माने ए सब क्वेश्चंस कर परिबो जदी कोठी डाउट होची प्लीज कहिबो ठीक अछि थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो थैंक